Good evening, everyone. Are you all there? Can you hear me? Am I audible? Yes. Good evening, everyone. How's the mood? Little down. Okay. So what did you learn yesterday? It doesn't matter what you do in your study leave. Those 3 hours, 15 minutes are important. Right? Yes. So on that note, we'll be starting with the next chapter. And that chapter is quite known to you already. It will be more of practical. And as I have already said, even if they ask you MCQ-based questions, there can be a few questions where calculation will be required, and now post calculation, they will give you 4 answers. So to find out the right answer, any which way you have to calculate things. That is a reason in my past 5 chapters, we have completed theory MCQs as well as practical MCQs. So this is practical chapter. More of practical questions can be asked from topic number 1 to 5. Major MCQs will be theory based. A few can be based on practical questions. But this chapter, if I talk about, it will be majorly on the basis of major MCQs will be based on practical calculations. Strategic revenue management. What are we going to study in this? We will be studying majorly about decision making. Now, decision making, when we talk about, it can be on the basis of CVP analysis, which you have already studied as marginal costing in your inter-syllabus. Relevant cost concepts is something which we'll be doing in final now. So this is more of inter, this is exclusively finals. Then we'll also be studying pricing policies in this chapter. We'll be first starting with decision making. Now, when I talk about decision-making techniques, there can be long-term decisions to be taken. There can be short-term decisions to be taken. There can be decisions about producing the product by ourselves, or there can be a decision to be taken about outsourcing the production process. Only distribution will be handled by us. Or there can be a decision involved in producing the product, but distribution will be outsourced. There can be a decision regarding buying the material and consuming it. There can be a decision regarding producing the material and using it as raw material in some other process of manufacturing finished goods, which we call it as captive consumption. Like if I want to manufacture a shirt, I'm buying cloth, but if I feel that by setting up a cloth manufacturing unit, I can procure cloth at a lesser rate, I would definitely prefer going for that. If I have a big company, major number of employees are traveling from several stations, I may have transportation of those stations, like all these IT companies and L&T people are doing. They have their own contract buses, they have their own buses. Now, this can be either outsourced or you can have your own transport division, which will work for you at cost and not by including profit. So there are so many decisions which are required to be taken when you do a business, and
This is what we are going to do when we take the decision. The first initial calculation is CVP analysis. Now, CVP analysis is cost, volume, profit analysis. CVP analysis is about analysis of revenue, analysis of profitability, where you split your basic cost structure into two parts, variable and fixed. Your major decisions are taken on the basis of variable cost structures. Some decisions are taken on the base after considering even fixed cost structures. So either decisions will be taken based on total cost, or in some cases, decisions will be taken based on cost per a variable cost only. Like for example, I'm having a classroom which has a capacity of 100 students. 75 students have already taken the admission. I have started with the batch. Batch has already been started. 10 students come to me. 10 students come to me. And they say, sir, we want to join JK Shah classes because we have heard a lot. The one who's taking CMP is an average professor, मयूरेश करके कोई है, वो वैसे ही ठीक है, but हम लोग वो मैनेज कर लेंगे. बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए हमको अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे, तो we want to join JKSC. Now, my calculation is very simple. I can still accommodate them here. The total will still be 85, which is well within the capacity limits. But these students started asking for discounts. अब डिस्काउंटेड फी स्ट्रक्चर अगर उनको बताना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे लिए कॉस्ट कितनी है. सो इफ दीज 10 स्टूडेंट्स ज्वाइन, डू यू थिंक आई नीड एक्स्ट्रा प्रोफेसर? No. Extra bench? No. Extra infrastructure? No. Extra classroom? No. Nothing I need extra except study material. Nothing I need extra except study material. Suppose study material cost of final CA is 10,000 rupees per student. Study material cost for final CA is 10,000 per student. Can I say that is the only cost that will be incurred on these students? So ideally, anything beyond 10,000 is accepted. So they said, sir, 98,000 we can't pay. We will. I said, okay, then no problem. Pay me, say 95,000. You can't pay. No problem. Pay me 90,000. They said, sir, thoda और discount, sir, thoda और. चलो 85 दे दो. अरे sir, thoda और discount. चलो अभी रो मत, 75 में बात done कर दे. They are very happy because they think they are getting 20,000 discount. I'm more happy than them because I'm earning 75,000 by simply spending 10,000. My profit is more. Now, what exactly has happened? I have taken all my decisions based on only that cost structure which gets incurred for those 10 units. Since these 10 students are additional students, cost incurred for additional units will be the variable cost. There will be only a variable cost which will be incurred for an additional student. Whenever you produce any unit additionally, the only cost that gets incurred for additional unit is a variable cost. That means I took all my decisions based on variable cost structure, and this is a concept of marginal costing, where all decisions are taken on the basis of marginal cost. Marginal costing is a specialized technique of decision making where all your decisions are taken on the basis of concept of marginal cost. And marginal cost means cost incurred for an additional unit. And which cost gets incurred for an additional unit? Variable cost. That means marginal cost is nothing but a variable cost. That means marginal cost is nothing but a variable cost. Every marginal cost will be called as a variable cost, but every variable cost will not be called as marginal cost. You understood? Every professor, including me, is a human being, but every human being is not a professor. That means if the cost is incurred for an additional unit, it becomes marginal. And which cost is incurred for additional unit? Variable. So whenever you incur variable cost for an additional unit,
that variable cost will be considered as marginal cost. So marginal cost is always a variable cost. And since this is the only cost which gets incurred with an additional production, our decision making is completely based on variable cost structure. And that is what we do. We don't rely on the old technique, sales minus cost is equal to profit. We don't rely on that technique anymore, because when I say sales minus cost is equal to profit, that cost is actually the total cost. When you say sales minus cost is equal to profit, that cost is actually a total cost. And if the cost is total cost, sales minus total cost gives me the profit. And when I talk about total cost, it is ideally split into two parts, variable cost and fixed cost. It is ideally considered as variable cost and fixed cost. It is ideally considered as a total of variable and fixed. Now, for me, since variable cost is the only cost of which is important from decision making, my structure of profit calculation goes like this. Sales minus variable cost gives me some profit, but that will not be considered as ultimate profit. That is called as contribution. From sales, you are subtracting some cost, some part of the cost. That means sales minus cost you are doing, you are getting profit, but it is not ultimate profit because fixed cost is yet to be incurred, recovered. So when you consider even fixed cost after that, at this stage, you will be getting total profit. So your traditional statement of sales minus total cost is equal to profit will now be vanished. Sales minus total cost is equal to profit will be vanished. And this new statement needs to be followed when you talk about decision making as per marginal costing technique. Sales minus profit, sales minus variable cost gives you contribution. Contribution, yes, I have deducted some cost. I have deducted some cost. That means it is some sort of profit, but it is not ultimate profit because we are yet to recover fixed cost. So from contribution, we subtract fixed cost and we get profit. So contribution is something which contributes towards the fixed cost and then it contributes towards the profit. And that is why the term is known as contribution. Now just imagine, when you talk about additional units, you have sales, you have variable cost, you get contribution. But when you talk about additional unit, there is no additional fixed cost incurred for additional unit. That means your contribution and profit both are same. Whenever you talk about additional units, there is no additional fixed cost. That means your contribution and profit both are same. In that case, why you want to get stuck with profit as the basis of decision making? You can take all your decisions based on contribution. Like what I did, students were ready to pay me fees of 75,000. 10,000 was the only cost getting incurred on them. So 65,000, ideally, I would say it was my profit. 65,000 ideally was my profit. Since there was no extra fixed cost on those extra students, my profit was also 65. Since my contribution and profit both are 65,000, I have taken my decision based on contribution and not profit. So whenever you talk about marginal costing, the basic fundamental is your marginal costing technique works on a simple principle that there is no additional fixed cost. Dekho, if there is a fixed cost in between, contribution is different from profit. But if there is no fixed cost, your contribution and profit both are going to be same. This is what we do in case of marginal costing concept. This is what we do in case of marginal costing concept. Let us take some simple illustration to understand the concept in a much better way.
You have produced and sold 5,000 units so far. You have produced and sold 5,000 units so far. 10 rupees was the selling price, 6 rupees per unit was the variable cost. 10 rupees was the selling price, 6 rupees was the variable cost. ₹10 was the selling price, 6 rupees was the variable cost. Naturally, your contribution has to be 4 rupees. Now, 5,000 into 10, 50,000. 5,000 into 6, 30,000. 5,000 into 4, 20,000. वैसे भी 50,000 minus 30,000 करोगे तो contribution 20,000 ही मिलेगा. Suppose 15,000 की fixed cost है आपकी, तो your profit will be 5,000. Okay, this is what we have done in this current scenario. अब अगर मुझे एडिशनल 100 यूनिट्स की ऑफर मिलती है या एडिशनल 1 यूनिट भी बनाने को कोई बोलता है, तो मेरे लिए तो सिर्फ 6 रुपए का खर्च आएगा. फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी नहीं. Until and unless I'm within the capacity limits. मैं अगर कैपेसिटी के दायरे में काम कर रहा हूं तो 6 रुपया इज द ओनली कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड ऑन वन एडिशनल यूनिट. 10 रुपए में उसको बेचोगे, 4 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन देगा हर एक नया यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट ओवर एंड अबाव 5,000. यू गाइस अग्री विथ मी? हर एक यूनिट ओवर एंड अबाव 5,000 will give me profit of contribution of 4. And since there is no extra fixed cost incurred beyond 5,000, contribution of 4 will itself be a profit of 4. 4 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन 4 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मेरे लिए तो प्रपोजल एक्सेप्टेबल है. इनफैक्ट एनीथिंग बियॉन्ड 6 विल बी एक्सेप्टेड. इनफैक्ट एनीथिंग एट 6 विल आल्सो बी एक्सेप्टेड. नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, पर एटलीस्ट मेरा कस्टमर बेस तो बढ़ेगा. 5,000 यूनिट्स में बेच रहा हूं, 100 यूनिट्स का ऑफर दिया किसी ने, बोलता है मैं 6 रुपया दूंगा हर एक यूनिट का, लेके जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा कस्टमर बेस बढ़ता है, मेरा मार्केट शेयर बढ़ता है. लेकिन 6 रुपए से कम का कोई ऑफर देगा ना, तो आई एम गोइंग टू डिक्लाइन दैट ऑफर बिकॉज आई विल बी एट लॉस. बिकॉज 6 रुपया तो मेरा हर एक यूनिट पे कॉस्ट आएगा. सो गाइज, when you talk about marginal costing, this is a statement of profit which we need to consider, majorly because all my decisions are taken on the basis of the concept of contribution. All my decisions are taken on the basis of contribution, because contribution is something which is you contributing first towards the fixed cost, and then it is contributing towards profit. So sales minus variable cost is contribution. ये वाला पोर्शन, sales minus variable cost is contribution. Fixed cost plus profit is also a contribution. Sales minus variable cost करोगे you get contribution. Fixed cost plus profit करोगे तो भी contribution मिलेगा. Fixed cost plus profit करोगे तो भी contribution मिलेगा. दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है which is called as PV ratio, profit volume ratio. क्या कहते हैं उसको? PV ratio. PV ratio is profit volume ratio. It is profit ratio of an additional unit. It is a profit ratio of an additional unit. It is a profit ratio of an additional unit. Are you understanding this? This is profit ratio of an additional unit. अच्छा, ideally profit ratio का फॉर्मूला होता है profit upon sales into 100. But since you are talking about additional units profit, I would better consider this as contribution upon sales into 100. That is better, no? अगर मैं contribution upon sales into 100 करता हूं तो मुझे डायरेक्टली पीवी रेशियो मिलना चाहिए, बिकॉज पीवी रेशियो इज अ प्रॉफिट रेशियो ऑफ एन एडिशनल यूनिट. इट इज प्रॉफिट रेशियो ऑफ एन एडिशनल यूनिट. एडिशनल यूनिट के लिए देयर इज नो फिक्स कॉस्ट. इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, एडिशनल यूनिट का प्रॉफिट और एडिशनल यूनिट का कंट्रीब्यूशन दोनों सेम होगा. सो आई कैन टेक ऑल माय डिसीजंस बेस्ड ऑन contribution rather than focusing on profit.
So instead of considering profit upon sales into 100, I would always take this as contribution upon sales into 100. अब ध्यान से देखना, अगर पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 है, तो वही पीवी रेशो अपॉन 100 इनटू सेल्स मस्ट गिव अस कंट्रीब्यूशन. करेक्ट? अरे है कि चले गए? ओके, सेम कंट्रीब्यूशन कैन बी फाउंड आउट. पहले तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हो, वो नहीं तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर सकते हो, और अगर वो नहीं तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो कर सकते हो. चलो ढूंढ लेते हैं. आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 20,000. आपका सेल्स कितना है? 50,000. तो कंट्रीब्यूशन 20,000, सेल्स 50,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, आपका पीवी रेशो आता है 40%. आपका पीवी रेशो आता है 40%. अब सेल्स पे 40% अप्लाई करो. 50,000 के सेल्स पे 40% अप्लाई किया, आपको मिला 20,000 कंट्रीब्यूशन. इतना ही नहीं, पर यूनिट सेलिंग प्राइस 10, उसका 40% अप्लाई करो, 4 मिल रहा है. मतलब कंट्रीब्यूशन अगर निकालना है तो तीन तरीके हैं मेरे पास: सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और तीसरा होता है सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो. करेक्ट? So that was about introduction of PV ratio. PV ratio is directly going to give you contribution. चलिए, अब मुझे एक बात बताओ. Right now I am earning 5,000 profit. I want to know the break-even point. Now, break-even point is a point at which there is no profit, no loss. When I say it is no profit, no loss, that means your total revenue will be equal to your total cost. Your total revenue is equal to total cost. तो कैलकुलेशन एकदम सिंपल. कैलकुलेशन एकदम सिंपल है. सिंपल कैसे? देख लो. मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए ना. नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये जीरो तब होगा जब 15,000 की पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर दी जाएगी. ये जीरो तब होगा जब 15,000 की पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी. दैट मीन्स समहाउ आई वांट माय कंट्रीब्यूशन टू बी 15,000. अब मुझे कंट्रीब्यूशन मेरा है 20,000, क्योंकि मैं तो प्रॉफिट कमा रहा हूं. बट अगर नो प्रॉफिट नो लॉस के स्टेज पे रहना है तो मुझे 15,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन भी 15,000 का अर्न करना पड़ेगा. देन ओनली माय प्रॉफिट विल बी जीरो. So now 1 unit, if you want to, if you sell, you earn 4 rupees contribution. 1 unit, if you sell, you earn contribution of rupees 4. You want 15,000 to be the contribution. If you want 15,000 to be the contribution, 15,000 upon 4. 15,000 upon 4. 3750 units will be your break-even point. और अगर मैं सच में 3750 यूनिट्स बना के बेचता हूं, अगर मैं सच में 3750 यूनिट्स बना के बेचता हूं, तो 10 रुपए के हिसाब से 37,500 विल बी द सेल्स. 6 रुपीज के हिसाब से 22,500 विल बी द वेरिएबल कॉस्ट. 37,500 minus 22,500 will give me contribution of 15,000. Quantity में change होने से fixed cost is not going to get changed. It is going to be constant at 15,000. That means
you will be at no profit, no loss stage. So what is the formula for break-even point quantity? Your break-even point quantity, if you want break-even point in terms of units, you try to recover your fixed cost. 15,000 was your fixed cost. So 15,000 upon 4, that is contribution per unit. I hope you guys recollect this formula. Fixed cost upon contribution per unit gives me break-even point in terms of units. Then how did you calculate? Oh my God. Then how did you calculate value? It was break-even point quantity. It was break-even point units 3750 multiplied by sales per unit. Correct? But if you apply this formula, every time, even if it is not asked, you will have to calculate break-even quantity and then you will multiply by the selling price. I don't want that. I want direct answer. So, fixed cost upon contribution per unit will give me quantity, multiplied by sales per unit will give me value, and not only for per unit. You can apply this formula also. This is your formula for break-even point in terms of rupees. So if you want quantity, there is fixed cost upon contribution per unit formula. If you want value, then this is a derivation. Fixed cost upon contribution multiplied by sales. Tell me if you have any query, any doubt, any confusion, contradiction, confrontation, argument. Are you guys clear with it? Okay. Now, there is no need to write break-even formulas and all. I think since you know that, you are here at final CA level. Derivation part, you must have forgotten. So I thought it is my duty to explain you all this. So I am explaining this. Either you must have forgotten this or you did not even know this. अगर तुम लोग ने formula base पढ़ा है इंटर में तो. Now, एक और important concept होता है margin of safety, which is very important. मेरी बात ध्यान से सुनो. मेरी basic requirement है 3750. I need to produce 3750 somehow to be at a safer side. Because the moment I produce and sell 3750, automatically I recover the entire fixed cost, and thereafter there is nothing left to be recovered. So I'm not no profit, no loss stage. But my team has actually produced and sold 5,000 units. That means I am safe by 1250 units. That means I am safe by 1250 units. I should have earned 37,500 to survive at break-even point. I have earned 50,000. So can I say 1250 units is my margin by which I am safe in terms of units, and rupees 12,500 is my margin by which I am safe. Correct? So how did you get it? Margin of safety is very simple, bachcha log. Margin of safety means actual sales minus break-even point sales. Whether it is quantity, whether it is amount, same formula can be used. Actual sales minus break-even sales. Boss, अगर मैं 5,000 के लेवल पे हूँ, if I start reducing my quantity by 1 unit, I think I will be able to do it till 1250 का reduction. उससे ज़्यादा reduce कर दिया तो my quantity structure will go below 3750 and I'll lose the safety because I'll start getting a loss below 3750.
सो 5000 से मैं 3750 तक आ सकता हूं, उसके आगे नहीं. So I'm safe by either 1250 or I'm safe by rupees 12,500, which is my margin of safety formula. This was one set of formulas. Another set of formula is based on profitability. Since you are earning profit here, bacha log, since you are earning profit here, 5,000, that means it is an indication that you are above break-even point. Since you are earning profit here, that means you are above break-even point. Okay, if you're above break-even point, just imagine 3750 units you have produced. 3750 units you have produced. One unit you produce beyond 3750. One unit you produce beyond 3750. If you produce one unit beyond 3750, if you produce one unit beyond 3750, if you produce one unit beyond 3750, the only cost that will be incurred is 6 rupees per unit, which is a variable cost. Because there won't be any fixed cost for an additional unit. So any quantity above 3750 will cost you 6. Any quantity above 3750 will make you earn 10. You will earn 10, you will spend 6. So your contribution after break-even point 3750 के ऊपर पहला यूनिट जब बनाओगे तो it will directly give you contribution of 4, which will be profit of 4. Since you are above break-even point, your 15,000 is already recovered. You are not going to incur 15,000 anymore. So your contribution and profit both are going to be same. So can I say one unit above break-even point? One unit above break-even point. One unit above break-even point. One unit above break-even point gives you contribution of 4, means it gives you profit of 4. So to get profit of 4 rupees, I have to sell one unit above break-even point. To get profit of 8 rupees, I should sell 2 units above break-even point. To get a profit of 40 rupees, I need to sell 10 units above break-even point. I have earned 5,000. I have earned profit of 5,000 at the rate of 4. जानी पहचानी quantity. एक यूनिट 4,000 का 4 रुपए का प्रॉफिट देता है तो 5,000 रुपया प्रॉफिट 1250 ने दिया होगा अबाउ ब्रेक इवन पॉइंट. तो दादू ऐसा है कि 3750 विल रिकवर कॉस्ट फॉर यू एंड 1250 विल स्टार्ट गिविंग यू प्रॉफिट. 1250 विल स्टार्ट गिविंग यू प्रॉफिट. सो व्हाट इज 5,000 बच्चा लोग? प्रॉफिट. सो profit upon contribution per unit will be margin of safety quantity. So naturally, profit upon contribution into sales will be your value. Profit upon contribution into sales will be the value. समझ में आया? So break even will recover cost. Margin of safety will deliver profit. अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए. How do you calculate break even value? Fixed cost upon contribution into sales. अब आपको ये पता है 1/2/3 क्या लिखोगे? 1/2/3/4? नहीं. This will be 3/2. If this is 3/2, 3/2 can also be recorded as 1/2/3. So the numerator basically becomes denominator of the main denominator. तो फिक्स कॉस्ट को वैसे ही रखता हूं मैं. कंट्रीब्यूशन डिनोमिनेटर है लेकिन मेरा न्यूमरेटर सेल्स बन जाएगा डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर. क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? कैन आई राइट लाइक दिस? यस. और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स अगर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या होता है? रे बाजू में पड़ा है तुम लोग के, स्क्रीन पे देखो. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मींस पीवी रेशियो. तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करने से ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू मिलेगी
वैसे ही प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो करने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू मिलेगी। तो ये एक और डायरेक्ट फॉर्मूला आया। दिस वाज अ डेरिवेशन ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एट इंटर लेवल। सिंपल बात याद रखना रे। चलो मैं तुम लोग को चार्ट ही बना के देता हूं। सिंपल फॉर्मूला याद रखना, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोनों में एक चीज, उसका मीनिंग समझ में आएगा तो उसका कैलकुलेशन समझ में आएगा। इट recovers cost. This gives profit. Break-even point recovers cost. Margin of safety gives profit. So everything is based on fixed cost. Here everything is based on profit. That is the only difference. Fixed cost upon contribution will give you break-even quantity. Profit upon contribution per unit. Fixed cost upon contribution per unit will give you break-even point quantity. Profit upon contribution per unit will give you margin of safety quantity. Fixed cost upon PV ratio will give you break-even value. Fixed cost upon PV ratio will give you break-even value. Profit upon PV ratio will give you margin of safety value. That is the only difference. So that is why break-even recovers cost and margin of safety gives you profit. And that is why the total quantity in the above example is 5000, जिसमें से 3750 लगा है कॉस्ट रिकवर करने के पीछे और बाकी 1250 ने मुझको दिया है प्रॉफिट। I hope you guys are very clear about the concept of break-even point and margin of safety. Okay, मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, अगर कॉपी नहीं किया है तो कॉपी कर लो। वैसे कॉपी करने जैसा कुछ है नहीं, तुम लोग के पास ऑलरेडी ये सारी चीजें अवेलेबल है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। ये पीवी रेशो का ले लो, ले चाहिए तो लिख लो। चलो आगे बढ़े, टेक्स्ट बुक में चलते हैं। So they have given you information about all this. Now I'm heading towards the main part, the calculation part, the understanding part. CVP analysis is basically split into three parts. Activity-based CVP analysis, then service and non-profit organization analysis, and then CVP analysis about just-in-time environment. धीरे धीरे सब डिस्कस करते हैं। नाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अगर मैं तुम लोग को ब्रीफली उसका रिकैप दूं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में होता क्या था। देखो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के 6 तरीके थे। यू मस्ट हैव लर्न दोस 6 मेथड्स इन इंटर सीए। पर यूनिट, पर आवर। अच्छा, पर आवर में पर मशीन आवर भी आता था या फिर आप पर लेबर आवर लेते थे। फिर था परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर एंड परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऐसे देयर वर 6 डिफरेंट हेड्स, 6 डिफरेंट बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन सारे देखो, आप अगर पर मशीन आवर रेट लेते हो किसी भी ओवरहेड के कैलकुलेशन के लिए, तो ये तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन दैट डिपार्टमेंट आर रिलेटेड टू मशीन। जैसे आप रेंट को डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी में फ्लोर एरिया के हिसाब से अलोकेट करोगे। डेप्रिसिएशन को मशीन के वैल्यू के हिसाब से अलोकेट करोगे। और बाकी कुछ भी हो सकता है, जैसे मशीन
रिलेटेड एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, वो सब मशीन आवर्स के बेसिस पे आप अलोकेट करोगे, ये सब ठीक है। लेकिन जब ए की टोटल आती है, बी की टोटल आती है, सी की टोटल आती है, तो यू हैव 3 ओवरहेड स्ट्रक्चर्स विच आर टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। अब एक ए के लिए मशीन आवर्स बेस है और बाकी के लिए लेबर आवर बेस है। अगर आपके मशीन आवर्स 1000 है, आपने 1000 से डिवाइड किया, तो आपने टोटल ओवरहेड्स को 1000 से डिवाइड करके मशीन आवर रेट निकाल लिया। दिस इज व्हाट वी हैव डन। लेकिन मेरी एक बात बताओ, दिस total of overheads include some expenses which are not at all related to machine hours, फिर भी उसको जबरदस्ती मशीन आवर से डिवाइड किया जा रहा है। दैट वाज अ फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हमने कब हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओल्ड फॉर्मूला के हिसाब से, कॉस्ट शीट के ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से अप्लाई किया है। Absorption costing being the oldest technique of overhead calculation, absorption costing being the oldest technique of overhead recovery, it was based on the old format of cost sheet where we had no separate intimation, where we had no separate mention about quality control cost, research and development cost. तो ये सारा खर्चा भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर ट्रीट करोगे तो मशीन आवर से डिवाइड होगा। सोच के बताओ, what research and development has to do with machine hours, what quality control cost has to do with machine hours, inspection cost, setup cost, ordering cost, कहीं पे हिसाब नहीं था। everything was consolidated under the head factory overheads, and factory overheads were getting divided by machine hours। मतलब गलती से तुम लोग क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारे एक्सपेंसेस जिसका मशीन आवर से कोई कनेक्शन नहीं है, उनको भी मशीन आवर से डिवाइड करके आते थे, उनको भी मशीन आवर से डिवाइड करके आते थे। दैट वाज रॉन्ग। You cannot divide all expenses by machine hours, no? Just because your department is machine oriented. यहाँ पे जन्म हुआ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, where we started taking decision, where we started charging cost to the customer based on accurate cost drivers. अगर सेटअप कॉस्ट है तो नंबर ऑफ सेटअप्स के हिसाब से जानी चाहिए, अगर इंस्पेक्शन कॉस्ट है तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस के हिसाब से जानी चाहिए, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से जानी चाहिए, अगर मटेरियल प्रोडक्ट डिस्पैच कॉस्ट है तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जानी चाहिए। And there was a different method of charging cost to the customer. It was extension of absorption costing. Activity-based costing is the recent most used technique in the industry. People have stopped following absorption costing, but absorption costing पढ़े बिना आप activity-based costing नहीं पढ़ सकते. That is why at inter-level you studied absorption costing first, and then we immediately discussed activity-based costing. Because activity-based costing is an advanced version of absorption costing only. Activity-based costing is also recovery of expenses, but by applying the most accurate cost drivers. Blindly सबके लिए machine hours नहीं होगा, जिसके लिए जो relevant है वही cost driver use करेंगे. So in that case, your fixed cost tend to change. उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं आपको। ये सब कुछ छोड़ दो, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखो, कुछ सॉल्यूशंस में इसमें से ही ले रहा हूं, जहां पे मुझे लगता है कि बेटर एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, वहां पे मैं आपको वर्किंग नोट करवा के दिखाऊंगा। यू विल मार्क दैट इन द टेक्स्ट बुक एंड यू विल कॉपी दैट इन द नोटबुक। ठीक है। A company manufactures cycles for both adults and children. Given below is information about cycles made for children. Monthly demand, ट्रेडिशनल एनालिसिस के हिसाब से 10,000, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से भी 10,000. नाउ नेचुरली क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड कांट बी डिफरेंट, only basis of absorption has changed, but quantity structure will be same only. Selling price and variable cost structures both are same, but I can clearly see that if selling price is 8,000 and variable cost is 7,500, contribution per unit will be 500 rupees. Fixed cost per month 10 lakhs. As per activity based costing, it is 8 lakhs.
Now, why there is a change? I'll tell you. Fixed cost of 10 lakhs per month under traditional CVP analysis are those that we do not vary with respect to the volume. Yeah, that is why they are called as fixed cost. Following an activity-based costing study, fixed costs that do not vary as per volume and any other cost driver are identified to be 8 lakhs per month. The study revealed that a milling machine is used to cut the metal into steer support. Production of these steer support takes place in batches of 25 units. अच्छा, इसका मतलब you need to understand the calculation here. Your total fixed cost is 10 lakhs. Your total fixed cost is 10 lakhs. ठीक है? Out of 10 lakhs, your actual fixed cost, which will remain unaffected, irrespective of change in the quantity, is 8 lakhs. And your other cost is based on, it is based on steer support cost. It is called as steer support cost. Now, this has to be 2 lakhs balancing figure. क्या लिखा है? There is a batch size of 25 units. There is a batch size of 25 units. There is a batch size of 25 units. So naturally, your 10,000 units, will be completed will be completed in 400 batches. बराबर? 10 लाख में से 8 लाख एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. नंबर ऑफ बैचेस के बारे में बोला है कि एक बैच में 25 यूनिट बनते हैं, तो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके बेचने के लिए मुझे 400 बैचेस एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे. क्वेश्चन आगे क्या क्या कहता है देखो. Once a batch of children's cycle is finished, next batch would be for adult cycle. Therefore, after each batch, there would be a setup change. That means if there are 400 batches of children's cycle, after every batch, there will be a setup time where your machines will be rearranged, where your infrastructure will be made ready for adult cycle production, which is a setup time. So if there are 400 batches, after each batch, there will be a setup phase. There will be 400 setups. There will be 400 setups. क्या समझ रहे हो? If there are 400 batches, there will be 400 setups. Therefore, after each batch, there would be a setup time. 10,000 children's cycle have to be produced. And the number of setups will be 400. Each setup cost me 500. Oye. Each setup cost me 500. If each setup cost you 500 per setup multiplied by 400, how much you're getting? 2 lakhs. You understood how that 10 lakhs is split if you are following ABC?
You understood? Are yes sir, no, Babu? 10,000 units will be produced in a batch size of 25. So there will be 400 batches, 400 setup. Each setup cost you 500. 400 setups will cost you 2 lakhs. So 8 lakhs will be intact. चाहे कितना भी ऊपर नीचे घुमाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 8 lakhs will remain 8 lakhs. लेकिन किंतु परंतु जीव जंतु अगर मैंने यहाँ पे बैचेस चेंज कर दिए बाबू, तो ये चेंज हो सकती है. That is the advantage of following activity-based costing. I will be charging only authentic cost to the customer. अगर मैंने 400 सेटअप के बदले 100 सेटअप्स में ही काम कर दिया, तो 400 into 500 के बदले 100 into 500 ही मेरी कॉस्ट आएगी. So I still have a chance to control my fixed cost if it is charged to the customer, if it is recovered from the customer based on activity-based costing concept. You understood what is happening here? Are yes or no? So this 2 lakhs is an outcome of this whole calculation. Copy this part first. Let me know once it is done. Okay. हमें प्रकट किया जाए. Yeah. Now, अगर मैं नॉर्मल एक्टिविटी बेस, अगर मैं नॉर्मल मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करता हूँ तो ठीक है, मेरे लिए फिक्स कॉस्ट 10 लाख है. लेकिन अगर मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करता हूँ तो भी फिक्स कॉस्ट तो 10 लाख ही है, लेकिन 10 लाख का ब्रेकअप होगा ये 8 lakhs unchanged, हमेशा unchanged. लेकिन steer support cost is subject to change because it is based on setups. So if there is a change in the setup, the cost may get changed. फिलहाल 8 plus 2 10 ही रहेगा. Next, each setup cost is 500, comprising of material like change of oil, jig, and etc. The cost was previously pooled together with fixed cost under traditional CVP analysis. मतलब पहले वो 10 लाख में थी, अब उसको अलग कर लिया. 500 per setup, Dylan. It's given here. No problem. Find break-even point per month and profit per month under traditional CVP analysis. Orally कर सकते हो, orally. Contribution per unit कितना? 500 into 10,000. 500 into 10,000. 50 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस 10 लाख की फिक्स कॉस्ट, 40 लाख का प्रॉफिट.
10 लाख की फिक्स कॉस्ट, 40 लाख का प्रॉफिट, बराबर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं गया तो भी ट्रस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी 10 लाख ही रहेगी, कॉन्ट्रीब्यूट 10,000 ही रहेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन 500 पर यूनिट ही रहेगा। ये भी 50 लाख का ही कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, बट 8 लाख माइनस नहीं होगा बाबू। माइनस तो 10 लाख ही करना है, मतलब वो भी 8 लाख ही हो, 40 लाख ही आएगा। सी करंटली 8 लाख इज करंटली 10 लाख इज द फिक्स कॉस्ट। उन्होंने सिर्फ बोला है कि 10 लाख में मार्जिनल कॉस्टिंग सीवीपी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग फॉलो करोगे तो 10 लाख की 10 लाख हिलेगी नहीं, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करोगे तो 8 लाख हिलेगी नहीं, 2 लाख हिल सकती है, लेकिन है तो 10 लाख ही ना फिलहाल। सो सी द सोल्यूशन, दोनों कैलकुलेशंस में उन्होंने 40 लाख ही लिया है, दोनों कैलकुलेशन में इनका प्रॉफिट 40 लाख ही आता है। ऑफ कोर्स उनका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही भयंकर है। ये देखो 50 लाख माइनस 10 लाख। अरे तुम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करो या ट्रेडिशनल फॉलो करो, 10 लाख की तो 10 लाख की रहेगी ना यार। हैव अ ग्लांस ऑन दीज टू कैलकुलेशंस क्विकली एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। उनके भयंकर कॉल कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो। ये देखो 8 लाख इन्होंने लिया है, 8 लाख, 2 लाख। एक काम कर सकते हो, इसमें आप लिख दो वर्किंग नोट इन नोटबुक। आपने अभी अभी वर्किंग नोट नोटबुक में कॉपी की है, उसमें वो उसका रेफरेंस दे दो। दैट विल गिव यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन दिस क्विकली। जस्ट फोकस और ए एंड बी, इधर उधर जाने की कोशिश मत करना, आगे जाने की कोशिश मत करो। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 विल डिस्कस। तुम लोग सिर्फ पॉइंट नंबर 1 पढ़ना। पढ़ लिया? Frija, it is considered as fixed because it is not going to get changed because of the quantity changes. 10,000 का it is not getting incurred based on period, it is getting it is not getting incurred based on volume, it is getting incurred based on setups. So for each setup it is going to be the same. That is why it is considered to be the fixed portion. चलो पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है? As a plant manager, you would like to keep the number of setups minimum since they reduce the capacity of the machine. Suppose that at any time, the milling machine can be used to produce other types of cycles like adult cycle, sport cycle, etc. Therefore, you propose to increase the batch size to 50 units. Guys, there is a change in the batch size. आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। Now there will be a revised fixed cost structure. कैसे? Now there will be revised number of batches. There will be revised number of batches. कैसे revised number of batches? अरे 10,000 units. 10,000 units you are planning to produce and sell. This time your batch size is 50 units. तो अभी 400 बैचेस नहीं होंगे, 200 बैचेस होंगे, और 200 बैचेस होंगे तो 200 सेटअप होंगे, और 200 सेटअप होंगे तो 500 पर सेटअप।
will now be 1 lakh. 500 per setup will now be 1 lakh. No, I'm not incurring 2 lakhs based on period. That's what I'm telling you. Whatever your name is, I can't see your name here. I can reduce number of batches. Who's going to stop me? It's my company. I will take the call. And that is why it is important to split your cost as a period cost and as a activity-based cost-driven cost. Since I have increased the cost, since I've increased the number of the size of the batch, now suddenly instead of 400 batches, there will be 200 batches. If there are 200 batches at the rate of 500, 1 lakh will be the cost. So revised fixed cost will be that 8 lakhs will remain same plus 1 lakh. That revised, that 8 lakhs will be constant. This is my real fixed cost. That will remain the same. Since cost drivers have reduced, since number of setups have reduced, my cost will also be reduced because it is not incurred period wise, it is incurred setup wise. The number of setups, what are they saying? The number of setup will reduce from 400 to 200. Due to large batch production, additional inventory storage area would be required to store that will cost company for 50,000 per month extra. Hey, तुम लोगों ने 25 यूनिट के बदले 50 यूनिट बैच साइज कर दिया तो स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ गई एंड देयर इज एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज which will also be considered as additional fixed cost. तो अब नए कैलकुलेशन के मुताबिक my revised fixed cost, नए कैलकुलेशन के मुताबिक for point number 2, this was for point number 1. For point number 2, my fixed cost will be revised to 9,50,000. Yes. Analyze the impact on break-even point. Analyze the impact on break-even point and profit per month. अब यार मेरी बात ध्यान से सुनना. तुम लोग का कंट्रीब्यूशन तो 500 पर यूनिट ही रहेगा. तुम लोग की क्वांटिटी तो 10,000 यूनिट्स ही रहेगी. तो 50 लाख का कंट्रीब्यूशन होगा और 9.5 लाख की फिक्स कॉस्ट होगी. मतलब 40,50,000. 40,50,000 will be your 40,50,000 will be your profit as per point number 2. अरे yes or no? चेक कर लो सेकंड कैलकुलेशन. अच्छा, ये 8,50,000 लिखा है. इस सब के लिए मैं वापस लिख रहा हूं वर्किंग नोट इन द नोटबुक, या फिर येलो पेजेस लेके चिपका देना इधर. वो जो भी मैंने उधर लिखवाया है ये येलो पेजेस लेके इधर चिपका दो. दैट इज ऑल्सो फाइन. चॉइस इज योर्स. बट ये सिंपल कैलकुलेशन है टू अंडरस्टैंड. उन्होंने मतलब भयंकर कुछ दिया है उधर. दिस इज सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. सी 40,50,000 प्रॉफिट आएगा और उसका एनालाइज किया है, एनालिसिस किया है. बैचेस रिड्यूस हो गए, बैच साइज बढ़ गई, बैचेस रिड्यूस हो गए, बैचेस रिड्यूस हो गए. तो चेंजेबल फिक्स कॉस्ट थी वो चेंज हो गए. ड्राइवर बेस्ड फिक्स कॉस्ट थी वो चेंज हो गए. दैट इज एडवांटेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग एबीसी. फ्लैट 2 लाख चार्ज नहीं कर रहा हूं. अगर सेटअप चेंज तो फिक्स कॉस्ट चेंज, अगर सेटअप चेंज तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी. अब सेटअप बढ़ाया तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी. डन. एक बार ग्लांस कर लो इसको. Yeah, so ABC will always charge appropriately, yes, accurately. So extra efforts will make customer pay extra. Less efforts will pass on the benefit to the customer. Have a glance on this.
You can always calculate that in terms of units. If they don't specify anything, give both. And you can calculate both, no problem. Now, next two parts of this same question. When should labor cost be factored into calculation cost per setup, and how can number of setups and cost of each setup impact flexibility? This part we have already discussed. Your fixed cost of 2 lakhs is reduced to fixed cost of 1 lakh. That itself is an answer for point number 4. So we'll not waste on point number 4. We'll discuss 3 first. Inclusion of labor cost in the cost of setup.
how can we decide? See, they have clearly said only material cost is included. When can we include labor? If you hire labor exclusively for the setup, otherwise I wouldn't have hired a labor. That worker is working only for setup phase, then labor can be added. The cost of temporary labor hired for a particular setup or a cost of outsourcing the setup activities would be included. If you are hiring someone exclusively for setup, it will be charged. अच्छा, आपका वर्कर आइडल बैठा है, सिर्फ सेटअप के लिए उसको काम पे लगा रहे हो और पैसा दे रहे हो, तो that can also be added. And however, where permanent labor is used for setup, who are otherwise fully engaged in the production process, and additional labor supplies is unavailable, then in that case, labor will be considered as the cost of labor and opportunity cost. I will explain what I'm talking about. सारे वर्कर्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सारे वर्कर्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ओवर टाइम का भी कोई स्कोप नहीं है, तो मतलब अगर मुझे सेटअप फेज एग्जीक्यूट करनी है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में से वर्कर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा. लिसन टू मी केयरफुली. फर्स्ट पार्ट इज योर वर्कर इज एक्सक्लूसिवली अपॉइंटेड फॉर सेटअप, ऐड कर देना सेटअप कॉस्ट में. वर्कर इज सिटिंग आइडल बट ओनली फॉर सेटअप ही कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. I mean, he comes into action. उसके लिए पैसा दे रहे हो, add it. तीसरा पार्ट ये होता है कि सारे वर्कर्स प्रोडक्शन में बिजी है, सेटअप के लिए देयर इज नो वर्कर अवेलेबल, देयर इज नो ओवर टाइम पॉसिबल, तो मुझे यहां से प्रोडक्शन में सपोज 10 वर्कर्स है, वो कम करके एक वर्कर यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 वर्कर के बदले हो जाएगा 9 वर्कर्स. इसके चक्कर में you will lose some production. So the contribution lost here will also be added here as opportunity cost. So cost of labor plus opportunity cost, both will be added as a cost of setup. ये पार्ट समझा है क्या बोला मैंने? This is what we call it as relevant costing. मैं आऊंगा इसी पॉइंट पे वापस, डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो. देखो, मुझे टीचिंग में मुझे टेस्ट सीरीज के लिए प्रोफेसर की मदद चाहिए. मैंने टेस्ट सीरीज के लिए प्रोफेसर हायर कर लिया, 50,000 उसको दिया, तो दैट कैन बी कॉस्ट, दैट कैन बी लेबर कॉस्ट डायरेक्टली चार्ज टू टेस्ट सीरीज. अच्छा, प्रोफेसर खाली बैठा है और मैंने उसको टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पैसा दिया, तो दैट कैन ऑल्सो बी चार्ज. लेकिन प्रोफेसर का टीचिंग आवर्स कम करके मैंने प्रोफेसर को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस है, बिकॉज आई वुड हैव कंप्लीटेड बैच अर्लियर. So in case there is no demand, in case there is no spare capacity, there is no idle time, there is no idle capacity, workers are working to the optimum level, there is no chance that overtime can also be done. In that case, मुझे वर्कर को प्रोडक्शन से शिफ्ट करके सेटअप पे डालना पड़ेगा, तो some part of production will be lost. That means whatever contribution I would have easily earned by selling those units will be lost. That opportunity cost, contribution lost, which is an opportunity cost, will also be added to labor cost of setup. So labor cost add hoga, opportunity cost add hoga, and that total will be considered as total labor cost of that setup. Is that part clear? Okay. Illustration number 2. Again, it is based on activity-based costing. Selling price 10, direct cost 5. अब direct cost है तो generally variable ही होगी unless question tells you that it is not variable.
Present number of setups 42. Cost per setup 450. Cost per setup 450. Number of setups currently 42. Production units per run. Quantity per batch. Quantity per batch 960. Yes, Pratyush. Production quantity will be production quantity per batch 960. Okay, production cost per batch 960. Number of batches 42. What was the page? 6.9. 6.9. Quantity manufactured. 960 per batch. 960 units per batch multiplied by 42 batches. That means currently we are producing 40,320 units. आप लिखना चालू कर दो मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Quantity manufactured 40,320 units. Currently we have produced 40,320 units. Then there is engineering hours 500 and cost of engineering hours 10. A company has begun activity-based costing of fixed cost and has presently identified two cost drivers. One is production run, other one is engineering hours. One is production runs and the other one is engineering hours. Total fixed cost is 96,000. After the above, 70 to 100 remains to be analyzed. समझाता हूं, लिखना चालू रखो. Fixed cost. How much is the fixed cost mentioned? 96,000. Question says there are two drivers. Question says there are two cost drivers. One is based on production run. Second one is based on engineering hours. अच्छा, production runs कितने? 42. Cost per run कितनी है? Production run means number of runs, number of batches. तो जितने batches होंगे उतने setup. हर batch के बाद setup की जरूरत पड़ेगी. So 42 batches, 450 per. 42 batches multiplied by 450. 18,900 will be total cost of production runs. Engineering hours, if I talk about 500 engineering hours, 10 रुपया rate दिया है. 500 engineering hours दिया है, 10 रुपया rate दिया है. So now you only take the total. 18,900 plus 5,000. 23,900 ये है, तो 96,000 में से 23,900 अगर ये है, तो rupees 72,100 is your other fixed cost which cannot be changed, which is not charged based on cost drivers. Copy this. आपको समझा क्वेश्चन का 70 to 100 कहां से आया? चलो कॉपी कर लो इसको. How do you know this? Balancing figure.
नन। चलो आगे बढ़ते हैं। There are changes of proposed. There are changes as proposed above for the next production period. Oh ho, change देखो क्या है? Cost per setup is reduced to, it is decreased by 90. That means it is reduced to 360. And number of production units per run. पहले 960 यूनिट्स एक बैच में बनाता था, अब 1008 यूनिट्स एक बैच में बनेंगे. प्लस देयर इज अ चेंज इन इंजीनियरिंग आवर्स. इसका मतलब now we'll have to find out revised structure. सबसे पहले, if your batch size changes, your number of batches will also be different. Your total quantity of 40,320 units, which was earlier getting produced in a lot size of 960, will now be produced in the lot size of 1008. 40,320 divided by 1008. Now there will be 40 batches. That means there will be 40 setups. So instead of 42 batches, 42 setups, there will be only 40 setups. So guys, your revised fixed cost will now be, other fixed cost 70 to 100 will never change, plus production run wali fixed cost. Production run wali fixed cost. Now we have 40 batches to be executed, and 450 is reduced by 90 per setup. So 360 is the cost. 360 multiplied by 40, 14,400 plus engineering cost. Last time 500 hours थे, अब कम होके 422 hours हो गए. 10 per hour का रेट तो आज भी मारूंगा मैं. So 90,720 will be your revised fixed cost. You guys can copy this. You guys can copy this.
Done. चलो. So that's a change in the fixed cost. That is what the question says. आगे क्या पूछा है? Required. Compute units and production runs should produce in the change scenario to break even. Very simple. तो इसके आगे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना कौन सी बड़ी बात है? ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ओके, सो आपकी नई नवेली फिक्स कॉस्ट है 90,720. 10 रुपए की सेलिंग प्राइस, 5 रुपए की डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट. 90,720 अपॉन 5, 18,144 यूनिट्स. और नंबर ऑफ बैचेस भी पूछा है. 18,144 units will now be produced in a batch size of 1008. So 18 batches will be executed. अब देखो, they can give you a question and they can ask you this as an MCQ. They will give you 4 options: 20, 16, 18, 40. C is the answer. तो उसके लिए कैलकुलेशन तो सीखना पड़ेगा ना बच्चे. That is why we are doing this. Copy this, copy this. उनके कैलकुलेशन से तो अपना बेटर ही है. If you're comfortable in that calculation, that calculation, fine. If you are comfortable with the presentation given by them, fine. वरना ये फॉलो कर लो. आगे बढ़े. चलो. पॉइंट नंबर बी में they have asked, advise whether we should break up the remaining fixed cost into activity based cost. Yes, of course, yes. अरे तुम लोग की 96,000 की फिक्स कॉस्ट 90,000 पे आ गई just because you had 2 cost structures based on ABC. अगर आपके बाकी के कॉस्ट स्ट्रक्चर भी ABC पे बेस्ड होंगे तो मैं कॉस्ट ड्राइवर को कंट्रोल करके फिक्स कॉस्ट कंट्रोल कर सकता हूं. इट इज सो सिंपल. दैट इज व्हाट दे हैव गिवन अस इन द सेकंड पार्ट. तो इधर तुम लोग लिख लो, प्लीज रिफर नोटबुक. बाकी इसके लिए दे हैव ऑलरेडी सेड. समझ में आया? अरे सेम पॉइंट उन्होंने लिखा है वहां पे, अभी उसको पढ़ के और टाइम वेस्ट को मत करो उधर. यू अंडरस्टूड दिस? पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3. एक्सपर्ट्स रोडवेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, Expert Roadways Services Private Limited is planning to run a fleet of 15 buses. कितने buses? 15 buses on a fixed route. The company has estimated total 2 crores 51 lakh 85,000 passenger kilometers per annum. 2 lakh 51,080 2 crores 51 lakhs 85,000 passenger kilometers per annum. It is estimated that they have 100% load factor, so occupancy will be full. Buses are purchased at a price of 44 lakhs per unit, whose scrap value at the end of 5 years is 5 lakh 50. So 44 lakhs cost हो गई, 55 lakhs scrap value हो गई, 44 lakhs cost हो गई, 5 lakh 50 scrap value हो गई, divided by estimated life. So 7 lakh 70,000 का depreciation आएगा. Depreciation 7.7 lakhs.
Depreciation 7.7 lakhs. Depreciation 7.7 lakhs. Is this clear? Each bus can give a mileage of 5 kilometers. An average cost of fuel is 66. 1 liter cost you 66. In 1 liter you travel 5. 1 liter cost you 66. In 1 liter you travel 5 kilometers. So you spend 66 for 5 kilometers. That comes to 13.2 per kilometer. Oil and lubricants per 1000 kilometers will be 3,300. Company will pay 27,500 per month to driver and to attendants of each bus. Hey, 27,500 each नहीं बोला है. Company will pay 27,500 per month to driver and to attendants. So 27,500 into 12, 3,30,000 will be your salary. अगर 27,500 each बोला होता तो 27,500 into 12 into 3 करते, लेकिन 22,500 बोला है टू ड्राइवर एंड टू अटेंडेंस, मतलब तीनों को 27,500 मिल रहा है. Annual charges, already annual charges mentioned. Insurance 55,000, garage charges 33,000, repairs and maintenance 55,000, permit charges, route permit charges up to 20,000 kilometers is 5,500. And 2,200 for every additional 5,000 kilometers. मतलब यार आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, इसमें कुछ कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो पर किलोमीटर है, कुछ कॉस्ट स्ट्रक्चर है जो पीरियडिक है, या तो मंथली दिया है या तो एनुअल दिया है. यू विल हैव टू अक्यूमुलेट एवरीथिंग. उसके लिए हमको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा नंबर ऑफ किलोमीटर्स. अब क्वेश्चन में पैसेंजर किलोमीटर दिया है टोटल 2,51,85,000 पैसेंजर किलोमीटर्स. पैसेंजर किलोमीटर का मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर. देखो, कॉस्ट पर केजी चाहिए तो आप टोटल केजी से डिवाइड करोगे, कॉस्ट पर टन चाहिए तो टोटल टन से डिवाइड करोगे. तो सर्विस सेक्टर में वी नीड लोड एज वेल एज डिस्टेंस बोथ. सो वी नीड पर पैसेंजर पर किलोमीटर, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर लेते. अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, हाउ वुड यू कैलकुलेट? नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स. तो गाइस दिस इज फॉर 15 buses. This is for 15 buses. Right? This is for 15 buses. We want only for one bus. So 2,51,85,000 divided by 15. 16,79,000 पैसेंजर किलोमीटर हुआ. इधर देखो, द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सीट इज 42. ड्राइवर सीट छोड़ के 42, लेकिन 42 में बाबू 2 अटेंडेंट बैठेंगे. ड्राइवर की सीट छोड़ के 42, लेकिन 42 में भी 2 अटेंडेंट बैठेंगे. तो हर एक बस में 40 पैसेंजर्स होंगे. अरे समझा क्या किया मैंने? चलो मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं. 2,51,85,000 पैसेंजर किलोमीटर है.
इंटू 1/15 करूंगा तो पर बस मिलेगा। एक बस में 40 पैसेंजर्स है, चालीस पैसेंजर से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स मिलेगा पर बस। सो 41,975 किलोमीटर्स। मैंने पैसेंजर किलोमीटर्स में से पैसेंजर हटा दिया, जो बचा वो किलोमीटर्स। समझ में आया? 41,975। टेक्स्ट बुक में ही कहीं पे लिख लो ये आंसर, ये कैलकुलेशन। क्विक। 2,51,85,000 15 बस का, तो एक बस का निकाल लिया। एक बस में 40 पैसेंजर है, 42 सीट है, लेकिन 2 अटेंडेंट भी बैठेंगे, तो 40 पैसेंजर जाएंगे, तो पैसेंजर किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय पैसेंजर करूंगा तो किलोमीटर्स बचेगा। सो 41,975 किलोमीटर्स पर बस पर एनम। टेक्स्ट बुक में लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट सजेस्टेड बस फेयर per passenger kilometer taking into consideration cost. Markup on cost. Markup on cost means profit on cost, 20% to cover general overheads and sufficient profit. And then part 2, वो सब बाद में। देखो 55, 33, 55, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कॉपी पेस्ट आइटम्स है। 55, 33, 55 एब्सोल्यूट कॉपी पेस्ट आइटम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 55, 33 एंड 55। डेप्रीसिएशन हमने कैलसी पे कैलकुलेट करके देख लिया था, 7,70,000 आ रहा है। डेप्रीसिएशन हमने कैलसी पे कैलकुलेट करके देखा, 7,70,000 आ रहा है। 27,500 आप लोग पे कर रहे हो एज अ सैलरी टू ऑल थ्री, तो 12 महीने का 3,30,000 आ रहा है। परमिट चार्जेस क्वेश्चन में दिया है, परमिट 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 then we have another weird cost structure, ऑयल एंड सन्ट्रीज। वो स्टेप कॉस्ट है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। फ्यूल का क्या है? 13.2। फ्यूल कॉस्ट इज 13.2। सो 13.2 इंटू किलोमीटर्स कितना है अपना? 41,975। 41,975 kilometers. 41,975 kilometers into 13.2, 5,40,70। मेन कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया। अभी परमिट फीस की बात करो। अप टू 20,000, 5,500, and then 2,200 for every additional 5,000 kilometers or part thereof. So permit fees, (41,975 kilometers). 41,975 kilometers में what is the question saying? Up to 20,000 kilometers 5,500, तो 20,000 kilometers तक 5,500, and then for every 5,000 2,200, तो 20,000 cumulative हो जाएगा 25, 30, 35, 40 and उसके above. Part thereof means even if there is a fractional rise, that has to be considered. Even if there is a fractional rise, that has to be considered.
थोड़ा छोटा बना लेता हूं मैं इसको. This will be 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000. अपना आ रहा है 41,975. So it has crossed 40,000. Part thereof का मतलब even if you cross the level even by 1 kilometer, entire amount is to be paid. वो था ना तुम लोग को section 1010 gratuity, covered under gratuity, पोगा पोगा, section 1010, 15 days salary for every completed year of service and part thereof in excess of 6 months. फिर लेते थे ना हम लोग 18 years 7 months was taken as 19 years and 18 years 3 months was taken as 18 years. Part thereof matlab even if you cross once, full amount will be charged. So 1, 2, 3, 4 and 5 additional cost structures will be charged. And the rate is 2200. And the rate is 2200 into 5. So that comes to 11,000. So total will be 16,500. Total will be 16,500. परमिट फी कॉपी कर लो चाहिए तो. वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2. 5,000 से बढ़ता गया तो ये होगा. That's what the question says. So there are five more slabs to be considered. Rupees 2,200 per slab. Rupees 2,200 per slab. There are 5 slabs to be considered. तो 11,000 वहां पे, 5,500 यहाँ पे, 16,500 आएगा. लिख लिया रे सबने? तो 16,500 भी मिल गया हमको. 16,500 हमको मिल गया. एंड कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड सन्ड्रीज क्या लिखा है? पर 1,000 किलोमीटर्स 3.3. अरे 41,975 डिवाइड बाय 1,000. पार्ट देयर ऑफ नहीं बोला है. So 41,975 divided by 1,000 into 3,300. ये आएगा आपको, मैं कैलकुलेशन इधर दिखा देता हूँ. 41,975 किलोमीटर्स अपॉन 1,000 किलोमीटर्स into rupees 3,300. You're getting total. You're adding 20% to that as profit, and you're getting the collection. Boss, इतना पैसा आना चाहिए जेब में पूरे साल में. और पूरे साल का पैसेंजर किलोमीटर्स कितना है? उन्होंने पूछा क्या है? फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर. हाँ, तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर विल बी 23,42,505 you want to earn. Passengers kilometers. Passenger kilometer. Passenger, अरे पर पैसेंजर पर किलोमीटर अगर ढूंढना है तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा. 23,42,505 डिवाइडेड बाय
number of passenger kilometer. So that comes to 1.3951. So 395 approximately. बस फेयर दे दिया. इन्होंने डायरेक्ट आंसर निकाला है एज यूजुअल. दे आर आईसीआई पीपल. दे डोंट find it mandatory to explain how the answer was calculated, but it's my duty to help you out. पर पैसेंजर पर किलोमीटर ढूंढना है तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा. कर दिया. एक साल में इतना कमाना है. एक साल में इतने पैसेंजर किलोमीटर्स होंगे तो 1.395. 1.395. इज दैट पार्ट क्लियर? और क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट. द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज हाईली रेगुलेटेड. The government has fixed the selling price bus fare as 1.35 for 2 years. और इन्फ्लेशन 8% बोला है. अब सुनो, इन्फ्लेशन 8% बोला है और आगे लिखा है रूट परमिट चार्जेस इज नॉट सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन. मतलब बॉस इस पे तो चेंज नहीं होगा. बाकी सब 8% बढ़ेगा सिवाय डेप्रीसिएशन के. डेप्रीसिएशन पे इन्फ्लेशन का क्या असर होगा भाई? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. Depreciation will not be affected because of inflation. Depreciation will be charged on the basis of that formula, which we have already calculated, 7,70,000. Baki insurance, garage rent, repairs and maintenance, guns, fuel, salary, सब बढ़ेगा. So guys, देख लो आप. 8% बढ़ा के 59,400 और 8% बढ़ा के ये गैरेज रेंट बढ़ गया. डेप्रीसिएशन इंटैक्ट, परमिट फी इंटैक्ट, टोटल कॉस्ट बढ़ी. अच्छा, at the rate of 1.35 per kilometer per passenger kilometer. 1.35 per passenger kilometers अगर कैलकुलेट करते हो तो रेवेन्यू सेम आएगा दोनों साल में. इन्फ्लेशन डेप्रीसिएशन और परमिट फी छोड़ के सबको अफेक्ट करेगा. ऑल आर अदर एक्सपेंसेस. अच्छा, रेवेन्यू तो दोनों साल बढ़ने वाला है नहीं. 1.35 रेट रहेगा तो 41,975 into 40 passengers. Total passenger kilometer 16,79,000. 16,79,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.35 करोगे तो पता चलेगा दोनों साल 22,66,650 ही आपका रेवेन्यू आने वाला है. कॉस्ट बढ़ने वाली है बिकॉज एक्सेप्ट डेप्रीसिएशन एंड परमिट फी एवरीथिंग विल गो अप बाय 8%. एज कंपेयर टू दिस 8% बढ़ा है ईयर 1 में और as compared to this 8% बढ़ा है year 2 में. and that is giving me the answer. प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लिया. सिंपल कॉन्सेप्ट इट इज. पढ़ लो एक बार. आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट देन.
Rija, it is mentioned in the question that permit fee is not applicable for inflation. Question says that. ये क्या लिखा है ना? चलो आ जाओ. The next concept that we are going to discuss is about relevant cost concept. Now, relevant cost concept can be used for short-term decision making as well as long-term decision making, but then basically it is for short-term. We'll discuss it out in detail. See, when the cost is relevant for you, when is the cost relevant for you? How total revenue came in? अरे यार तुमको कैलकुलेशन करके बताया मैंने. टोटल रेवेन्यू लिखा है ना 1.35 इंटू 40,000. कितना था वो किलोमीटर्स? 41,975. 41,975 kilometers into 40 passengers. Kilometers. तो ये हुआ टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स इंटू 1.35. Sonal, is this clear? Sonal, is this clear? Chalo. When your decision is considered to be relevant, your decision will always be relevant. Your decision will be considered to be relevant only when it is an outcome of your decision. आपके डिसीजन लेने की वजह से अगर कोई कॉस्ट इनकर होती है तो इट इज रिलेवेंट. आपके डिसीजन लेने से कोई कॉस्ट इनकर होती है तो इट इज रिलेवेंट. किसी कॉस्ट के इनकर करने से आपकी डिसीजन ली जाती है तो भी इट इज रिलेवेंट. सो बेसिकली एवरी एक्सपेंडिचर that comes into existence because of your decision is relevant. But sometimes more than that, more than the concept of cost, there is one more thing. If you take a decision and your revenue of some type gets affected, your revenue gets affected because of some reason, that is also considered as relevant cost. See, sometimes your decisions are taken on the basis of relevant gain or relevant loss. Sometimes your decisions are taken on the basis of relevant gain and relevant loss. Relevant gain starts with relevant revenue.
Relevant revenue means money received because of the decision. I take decision, I start earning. That is relevant revenue for me. I take decision and my some expenditure is saved. So outflow saved is also a relevant gain. Minus relevant cost. Minus relevant cost. Money received because of the decision. Outflow saved because of the decision is revenue. That means money spent for the decision due to the decision is a relevant cost. And if you are losing some inflow lost. Opportunity lost is opportunity cost. You guys already know that. Next best option वगैरह ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है. Keep it simple in life. समझे ना? Next best option and all that कोई नहीं पूछता ये. Opportunity lost is opportunity cost. So relevant revenue minus relevant cost will give you either relevant gain or relevant loss when you do 1 minus 2. When you do 1 minus 2. So you can write this in your notebook. You can write this in your notebook. Statement of relevant gain and relevant loss. Yes, Dhwani, we wrote so many things. I'll give you a screenshot later. चलो. अब इसका मतलब क्या है समझ लो अच्छी तरह से. You have already paid fees to JKSC. So is there any relevant cost in attending the lecture? No. But if I ask you to attend lecture in a branch, you will have to travel, you will have to spend some money, then it becomes a relevant cost for you. Any cost incurred because of your decision is a relevant cost.
and any revenue which is lapsed. Like for example, I have a rented premises. I'm generating a rent of rupees 50 lakhs, 50,000 per month out of it. Tomorrow I decide to have my own setup. So instead of going for a rented premises, I asked my tenant to get lost. So my first cost of new business will be 50,000, which is an opportunity cost which I have sacrificed. So inflow lost, money spent is relevant cost, agreed, but inflow lost is also a relevant cost. Money earned is revenue, everyone knows that, but outflow, if you are losing, I have some machine, I'm supposed to dispose it off. Disposal cost is 5,000. I have to pay 5,000 to truckwala. I have to pay 5,000 to truckwala. I have to pay 5,000 to truckwala to dispose that machine off. And suddenly I'm getting some offer where that machine can be used. I can use that machine. My cost of disposal of 5,000 is saved. My cost of disposal of 5,000 is saved. So outflow saved is also considered as relevant revenue. Now, the cost which is already incurred in past is called as sunk cost. The cost which is already incurred will never be considered as to be the relevant cost structure. The cost which is already incurred will not be a relevant cost for us. As I told you, the cost which gets incurred because of the decision and the cost which is the revenue which is lost because of the decision are relevant cost. The revenue which is generated and the cost which is avoided, outflow avoided, will also be called, will be called as relevant gain, relevant revenue. Illustration 4. Illustration 4. Recently, Ministry of Health and Family Welfare along with the Drug Control Department have come on a healthcare center on healthcare centers for charging exorbitant fees from their patients. Human Healthcare Limited, a leading integrated healthcare delivery provider company, is feeling pinch of measures taken by authorities and facing margin pressures due to this. HHCL is operating in a competitive environment, so it's difficult to increase the patient numbers also. I cannot increase the volume. Management consultant of the company has come out with some plan for cost control and reduction. HHCL provides treatment under package system, whereas fees is charged irrespective of days a patient stays in the hospital. Consultant has estimated 2.5 patient days per patient. He wants to reduce it to 2 days. मतलब patient अगर 2.5 days अभी फिलहाल रह रहा है, it should be reduced to 2. It should be reduced to 2. यानी कि can I say a patient 0.5 days नहीं रहेगा, वो अब 0.5 days पहले चला जाएगा. By doing this, the consultant has targeted the general variable cost of 500 per patient day. तो 0.5 days अगर पेशेंट जल्दी चला जाता है तो 500 रुपीज पर पेशेंट डे के हिसाब से 250 रुपया पर पेशेंट मेरा बच जाता है. And there are 15,000 patients. तो 15,000 into 250. I will be saving 37 lakhs 50,000. You can write with a pencil. 0.5 days बचा लिया. पेशेंट को 0.5 days में घर पे भेज दिया. मतलब 0.5 days पहले घर पे भेज दिया. तो 0.5 days का 500 रुपए के हिसाब से अब मुझे 250 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है. This will happen with all
15,000 patients, मतलब can I say this is relevant revenue for me? मेरा पैसा बच रहा है बाबा. Then medical superintendent has some concerns with the consultant plan. According to him, reducing patient stay would be detrimental to the full recovery of the patient. मतलब तुम लोग पेशेंट को रिकवर होने से पहले ही घर भेज रहे ताकि उस बेड पे कोई और लेट सके. They would come again for admission, thereby increasing current readmission rate from 3 to 5%. अभी पेशेंट जाने के बाद वापस आने का चांसेस 3% है, वो बढ़ के 5% हो जाएगा. इट मीन्स admitting 300 additional patients, and it has to spend 25 lakhs more to accommodate this increase in readmission. 2.5 डेज के बदले 2 दिन में पेशेंट को भगाओगे तो मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होगा कि बिफोर द पेशेंट इज क्योर्ड यू आर सेंडिंग देम, तो चांसेस ऐसा है कि वो वापस आ सकते हैं. 3% पे नॉट जनरली वापस आते हैं, अब 5% आएंगे, मतलब 300 ज्यादा वापस आएंगे. उसके चक्कर में 25 लाख का और खर्चा आएगा, एडिशनल कॉस्ट टू बी इनकर्ड. मतलब अगर मैंने ये डिसीजन ली तो वहां पे 37 लाख 50,000 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 25 लाख ज्यादा देना पड़ेगा. But the consultant has found blessing disguise. He said every readmission is treated as a new admission, so it would result in additional cash flow of 4,500 per patient. तो 300 पेशेंट्स वापस आएंगे एक्स्ट्रा, तो उनसे एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट होगा 13.5 लाख का. अरे बाबा, मतलब 13.5 लाख का रेलेवेंट रेवेन्यू मुझको दिख रहा है. 13.5 लाख तो एक्स्ट्रा आएगा, प्लस वो ऊपर 37,50,000 बचाया वो कमाऊंगा, तो टोटल रेलेवेंट रेवेन्यू इज 51 लाख. उसके सामने अगर 25 लाख खर्चा होता भी है तो भी मेरा रेलेवेंट गेन 26 लाख का तो अभी भी दिखाई दे रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 2.5 डेज के बदले 2 दिन में भगाते हो तो 0.5 डेज बचता है. हर एक दिन का 500 रुपए के हिसाब से 37,50,000 आपका बचता है. 37,50,000 बचा, विच इज योर रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट रेवेन्यू. उसके चक्कर में 25 लाख रुपए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा टू अकोमोडेट एडिशनल रीएडमिशंस. बट एवरी रीएडमिशन विल गिव मी 4,500. सो 13,50,000 का एक्स्ट्रा रेलेवेंट रेवेन्यू, 37,50,000 का सेविंग इन कॉस्ट. सो नेचुरली मेरा अगर फॉर्मेट देखोगे तो 13.5 लाख इधर कमाओगे, 25 लाख ज्यादा खर्च होगा, और आउटफ्लो सेव्ड होगा 37,50,000. मतलब ये हो जाएगा 51 लाख, ये हो जाएगा 25 लाख, मतलब 26 लाख का तो प्रॉफिट दिख रहा है मुझे. समझ रहे हो क्या? बस वही दिया उन लोगों ने. सोल्यूशन चेक करो. चलो.
Okay, done. Chalo. Now, where can we use this CVP technique or marginal costing technique? How the decisions are taken, where can be used for decision making purpose? Decisions about outsourcing, decision about make or buy, आगे प्रोसेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्राइसिंग के लिए, wherever your additional unit is taken into consideration, you can use marginal costing as a technique. सबसे पहले आउटसोर्सिंग की बात करते हैं. आउटसोर्सिंग मतलब अगर आपको प्रोड्यूस नहीं करना है तो यू कैन गेट इट प्रोड्यूस्ड and sell it. So naturally, if my production cost is greater than buying cost, I would prefer buying the product. But if my production cost is less than buying cost, then I would always prefer producing it. आउटसोर्सिंग का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, द काइंड ऑफ क्वालिटी वी एक्सपेक्ट, द काइंड ऑफ क्वालिटी वी कैन produce, the same quality may or may not be available. Secondly, your availability of the product on timely basis is also a concern. Then there is a risk when you are outsourcing your technical know-how to an outsider. There is a risk that it may get copied and the one whom you have outsourced your production may start his own product, same product under his brand name. मतलब जैसे आपने नाइकी का मेरे पास प्रोडक्शन एजेंसी है. I'm producing Nike shoes. I'm giving those shoes back to Nike. They fix the label and they sell it in the market. लेकिन अगर मुझे नाइकी का नो हाउ मिल गया तो I may start my own manufacturing under my own brand name. होता है, possible है. So that is outsourcing. See, यही लिखा था ना मैंने. Didn't I mention this? And then I also discussed this qualitative factor, reliability, impact on customer, supplier, quality of goods. Sum solve करेंगे, सब पता चल जाएगा. आ जाओ question number 5 पे. Quickly, we'll complete this question. DBA manufactures and sells 25,000 table fans annually. One of the components required for fans is purchased from outside supplier at 190. अब सुनो, ध्यान से सुनो. You are buying something for 190. Annually, it is purchasing 25,000 components for its usage. Naturally, 25,000 finished goods है तो 25,000 material मंगाओगे. The production manager is of the opinion that if all the components are produced at own plant, it is possible to maintain the better quality of the finished product. Further, he proposed that in the in-house production of the component and other items will provide more flexibility to increase annual production by another 5,000 units. Babu, 25,000 के बदले you will start selling 30,000 units. तो 5,000 additional unit will generate additional contribution. He estimates the cost of working as follows. Direct material, direct labor, factory overheads. Now, please understand, factory overheads are 40. Factory overheads are 40, 70% are variable. Naturally, balance 30% must be fixed. Now, please remember, whenever there is any fixed overheads absorption rate, it is never relevant from your decision-making perspective. Fixed overhead absorption rate is not a rate at which you incur the cost. Fixed overhead absorption rate is a rate at which you recover the cost. And that is why my decision is completely on the basis of variable cost structure. So I will spend 80 to produce. I will spend 80 on material to produce the product. I will spend 75 on labor to produce the product. I will also spend 28 on variable overheads to produce the product. So 80
plus 75 plus 28. 183 per unit is going to be variable cost. It is going to be marginal cost. It is going to be relevant cost for me. Fixed cost of 12 per unit is an absorption rate. It is a rate at which it is recovered. You're not incurring that cost. You're not spending 12 per unit as fixed cost. बॉस, मैं जब शर्ट की या मेरे कोचिंग क्लास की फीस जब डिसाइड करता हूं मैं, तो स्टेशनरी कॉस्ट इज ऑलरेडी इज एक्चुअली गेटिंग इनकर्ड. प्रोफेसर्स रेम्यूनरेशन इज आल्सो गेटिंग इनकर्ड. But fixed overhead जो मैं ऐड करता हूं, that is a rate at which it is recovered from the customer. That is not the rate at which you incur the cost, because it is incurred on a per annum basis or per month basis. So it is immaterial for us. It is irrelevant for us. Are you guys clear with it? अरे ये सोनो, कुछ तो बोलो यार. तो 190 में खरीदने के बदले 190 में खरीदने के बदले मेड इन इंडिया मतलब मेड इन योर ओन फैक्ट्री. 183 में काम हो जाएगा यार. 7 रुपया बच रहा है. वो 7 रुपया बच रहा है. 7 रुपया. So your variable cost goes down by 7 rupees. Instead of spending 190 on buying, you will spend 183 on production. 7 रुपए से वेरिएबल कॉस्ट कम, 7 रुपए से कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा. That is relevant for me. The proposal of the production manager was referred to marketing manager for his remarks. He pointed out that to market the additional units, the overall unit price should be reduced by 5%. The overall selling price will be reduced by 5%, and additionally 1 lakh per annum should be incurred for advertising. मतलब अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो मुझे एडवर्टाइजिंग पे 12 लाख रुपया पर एनम खर्चा करना पड़ेगा, विच इज माय रेलेवेंट कॉस्ट. क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं डिसीजन ले रहा हूं. मेरी सेलिंग प्राइस कम होगी. द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस इज 2500 एंड प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन इज 600. मतलब सेलिंग प्राइस मेरी 5% कम होगी. सेलिंग प्राइस 5% कम होगी मतलब मेरा सेलिंग प्राइस 125 से कम होगी. अरे आपको समझ में आ रहा है आपके साथ क्या होने जा रहा है? आर यू इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग विथ यू? 7 रुपए से वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो 7 रुपए से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा. लेकिन बॉस सेलिंग प्राइस तो 125 रुपए से कम होगी. Plus, there will be an additional fixed cost of 12 lakhs waiting for you. Analyze the make or buy decision on unit basis and total basis. ये देखो, अब इधर ध्यान दो. How much is your selling price? 2500. How much is your contribution? 600. इसका मतलब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1900 है. अरे सेलिंग प्राइस अगर 2500 है, कंट्रीब्यूशन अगर 600 है, तो वेरिएबल कॉस्ट 1900. अब 1900 वेरिएबल कॉस्ट में से 190 अगर परचेज प्राइस में निकाल दूं तो मेरी अदर वेरिएबल कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम मटेरियल विल बी 1710. बराबर है? देखो, मैं इधर कैलकुलेट करके दिखाता हूं, तुम लोग बाद में उधर से टेक्स्ट बुक में है, तुम लोग को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. 25,000 units and 30,000 units. 25,000 units and 30,000 units.
एकदम सिंपल है। 30,000 क्यों आपको पता चला है ना, वी आर प्रोड्यूसिंग, वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस 5,000 मोर। अच्छा, तो सेल्स के लिए हाउ मच इज द सेलिंग प्राइस हियर? 2,500। ये 5% कम हो जाएगा, ये आएगा 2,375। ओके, देन वी हैव वेरिएबल कॉस्ट। वी हैव वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी होगी 1,900। वेरिएबल कॉस्ट आपकी होगी 1,900, देख लो, वेरिएबल कॉस्ट आपकी होगी 1,900। तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन 600 रुपए का आता है। यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन 600 रुपए का आता है। तो एक इंडिविजुअल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल कैलकुलेशन अगर करना है तो ध्यान दो, contribution at the rate of 600. Contribution will be at the rate of 600. So 600 रुपए के हिसाब से it will be 150 lakhs। लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है? 600 रुपए का कंट्रीब्यूशन, 7 रुपए से वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो 7 रुपए से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, एंड 125 से सेलिंग प्राइस कम होगी तो 600 का 7 रुपया बढ़ेगा और 125 कम हो जाएगा। सो आपका कंट्रीब्यूशन होगा 482। तो 482 इंटू 30,000 आपको करना पड़ेगा, ये आएगा 1,44,60,000। आपको समझा मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे किया? वो सेल्स माइनस वेरिएबल का है, सब करने की जरूरत नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन 600 था पहले, 600 का 600 था। ओके, अभी वेरिएबल कॉस्ट 190 के मटेरियल के बदले 190 का खरीदने के बदले 183 में प्रोड्यूस करोगे, 7 रुपए से वेरिएबल कॉस्ट डाउन, 7 रुपए से कंट्रीब्यूशन बढ़ते हुए 600 का 607 हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु जीव जंतु, सेलिंग प्राइस 2,500 का 5% कम होगा, 125 से सेलिंग प्राइस कम होगी तो नेचुरली कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। तो 600 माइनस 125 प्लस 7, रिवाइज कंट्रीब्यूशन फिगर होगी 482। अच्छा, लेकिन सुनो, ये भी तो है। अरे समझे कि नहीं? एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी अपने को कंसीडर करनी पड़ेगी। तो देखो, इधर इधर का प्रॉफिट 1,50,00,000, इधर का 132,60। So how much is reduction in profit? 17 lakh, 17 lakhs 40,000। यस बाबू, अब 17,40,000 जो है डिवाइड बाय 30,000, reduction in profit 70 lakh, that means loss of profit per unit will be 70,40,000 divided by 30,000 units, revised units,
ये आएगा 58। समझ में आया? बस वही पूछा इन लोगों ने। और बाकी आउटसोर्सिंग के लिए रिकमेंडेशन क्या है, वो तो बाकी के सब चीजें। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है देखो, व्हाट इज आस्क्ड इन द सेकेंड पार्ट। recommend the most profitable alternative। अगर मैं 25,000 का 30,000 नहीं करता हूं तो वो 12 लाख का खर्चा नहीं आएगा, बराबर ना? इफ आई डोंट इंक्रीज क्वांटिटी फ्रॉम 25,000 टू 30,000, वो 12 लाख का खर्चा नहीं आएगा, एंड देयर विल बी ओनली सेविंग। मुझे see, my selling price was reduced because I was producing more. When you are increasing the market share, you'll have to reduce the selling price to penetrate your output in the market. तो वो जो 125 का सेलिंग प्राइस रिडक्शन है वो भी नहीं होगा, 12 लाख की फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, 7 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट सेम। 7 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट तो घटेगा बिकॉज आई हैव स्टार्टेड बाइंग द प्रोडक्ट, आई हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द मटेरियल। तो 25,000 का आपका करंट प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 7 रुपए का सेविंग, 1,75,000 विल बी योर राइज इन द कॉन्ट्रीब्यूशन। ये ऑप्शन वैलिड है। घर पे जाके पढ़ लो अच्छी तरह से, समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू कर देंगे। Now guys, I'm giving you a chance to take the screenshot. Those who couldn't attend in the beginning, quickly take screenshots. ये ले लो।